हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग काइनेमैटिक्स के बारे में जानेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके वेरिएबल्स के बारे में और जो इक्वेशन रिलेटेड है काइनेमैटिक्स से उसके बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स है क्या? तो पहले तो हम समझ लें कि काइनेमैटिक्स में काइंड का मतलब क्या होता है। काइंड का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। सो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन हो और उस मोशन से रिलेटेड हमें जो भी वेरिएबल्स फाइंड करने हो और उसमें जो हम लोग मैथ्स अप्लाई करते हैं उसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन एंड द मोशन को फाइंड करने के लिए मोशन कैसे हो सकता है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ बॉल। जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज फोर्स हम 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉल अपने इनिशियल पोजीशन से हट के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा। सपोज जहां से ये चल रहा है ये बॉल, ये पॉइंट ए है और जहां पे आके ये खत्म हो गया इसे पॉइंट बी कहते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is achieved when we applied force of Q 2 न्यूटन। तो इस केस में हम लोग इसकी वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके वेरिएबल्स क्या है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को अचीव करता है। तो फर्स्ट वेरिएबल हो गया डिस्टेंस। सेकेंड वेरिएबल हो गया जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब देयर इज नो डिफाइंड डायरेक्शन इज देयर। तो किसी भी तरह का कोई डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर गोल या किसी भी माध्यम से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा सकता है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो सेकंड वेरिएबल है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके डिफाइंड डायरेक्शंस होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट बी पे है। जैसे समझिए कि ये यूनिडायरेक्शनल है। इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर and reaching at particular point B, right? Suppose some object is starting from here and reaching at point B. So if it travels straight line, then it is called as displacement. So the straight line is the shortest distance traveled by an object. So coming to what is distance? Suppose the same object start traveling from here like this. So it it does not have uniform movement
It is non-uniform in movement. So that is why it is called distance. Now coming again, suppose if this same object is traveling like this and reaching, what is the meaning is that same object is traveling in three different paths. This is path 1, this is path 2, and this is path 3. And the very less time in which object A start traveling and reach to point B in a very short interval of time is called displacement. The displacement has a defined direction. So that is why it is called vector quantity. And that is what this is called scalar quantity because it does not have defined direction. Hope you have understood. So coming to the what are the variables we are going to study in this? The first, already I talked about the distance, the second displacement, and the third one, what we are going to know is about speed. The fourth one is velocity, velocity, and the fifth one is acceleration. So, and the sixth one is jerk. So, generally, uh, no one will tell you about the jerk, and the questions which are coming is mainly based on these five variables: distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. So, let's focus on these five variables. So, the correlation of all these five variables allow us to find the solution of the problem. So, the simple formula, you know that S is equal to u plus 1 by half dt, where S is the displacement. To find the displacement, we have this formula, right? So, similarly, we have v square is equal to mu square plus 2as, like this. So, using these variables S, which denotes here displacement, V, which denotes here velocity. So displacement, velocity, speed, these are the variables which is combined together to find the solution of the problem. You understand? So let us understand this by solving the problem. Suppose we have one ball. This is a ball. And this ball, we are throwing it in upper direction, right? And what is the question is that, and when the ball reached, suppose the ball reached over here, after throwing at, its the initial velocity is ui and the final velocity is vi. At what height the velocity become one fourth? If this is the question, at what height the velocity become one fourth of the initial one? So in that case, what you have to do, how you can solve this? You no need to apply this type of formula over here. So what you can do is, the question is at what particular height the velocity become one fourth. So if the distance between this to this point is given as 85 meter, suppose 85 meter. So what we can do is that
one fourth. What is the question is one fourth. At what height the velocity become one fourth? What you have to do? Take the denominator and square it. So 4 into 4 is 16. Minus 1 is 15. 16 minus 1 do 16 minus 1 is 15. What is the maximum height? They're asking is given 85 meter. So put this one is 80, 85 meter. So when you solve this, you will be able to get the answer. Or to make it in a in whole figure, if you want answer, suppose that the height reached is 80 meter, just you do it 80. So 16 5 80. So 75 meter is the answer. So like this, if the same question is asked in a, if suppose a one ball is thrown, if this ball is thrown a height of at a height of 20 meter, and at what particular height the velocity becomes half. So in that case, the same thing what you can do is 2 square is 4, 4 minus 1 is 3, and this is 20. So 4, so this is the 15 meter is the answer. So in this way, you can solve the question based on kinematics. Like this, these are tricks to solve the question. Hope you have liked this video. Thank you for watching.